हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास अगेन। तो इन लास्ट क्लास वी डन 10 क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो अभी तक हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने देख लिया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज miscellaneous of chapter 5. Okay, so this is very important exercise for exam point of view, and the important thing here is these questions today are very important for exam. तो मैं आपको वही क्वेश्चंस आज सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो टुडेज क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ a plus iota b is x plus iota square divided by 2x square plus 1, prove that a square plus b square is equals to x square plus 1 whole square and 2x square plus 1. Okay, so here look at here, if we have a given complex number in the equation and we have to prove that it is equal to a real numbers. Okay, देखिए यहाँ पे भी real number है, यहाँ पे भी real number है, because there is no iota present. So you can take modulus only because modulus gives you the real value. Okay, so in solution is take modulus of both sides. If you can take modulus of both sides, that is a plus iota b mod is equals to mod of x plus iota whole square divided by 2x square plus 1. So that is equals to mod a plus iota b is equals to mod of x plus iota whole square divided by 2x square plus 1. देखिए, this is a real number, there is no iota present, so the mod of a real number is again the real number as it is, and this is x plus iota whole square. Now you can take the modulus of these two is under root x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1. Now you can take squaring both sides, square of both sides, then you will get a square plus b square is equals to x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1. Okay, if you can take. Okay, so this is your final answer. Okay, so now come to the question number 12. Question number 12 is very important. Question number, please write down the important questions of this exercises 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 20. ओके, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आज, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। So now question number 12, this is let z is equals to 2 minus iota and z2 is equals to minus 2 plus iota, and you have to find real value of z1 z2 divided by conjugate of z1. Okay, that means you have to find the real value of 2 minus iota into minus 2 plus iota divided by 2 minus iota conjugate is this. Okay, so you can find out by multiply these two terms. This is 2 minus 2 minus 4, this is minus 2 iota plus 2 iota plus 2 iota, and this is minus iota square divided by 2 plus iota. Okay, the conjugate of 2 minus iota is 2 plus iota, so that is real part of this is plus 1, this is minus 3 plus 4 iota divided by 2 plus iota. You can rationalize it like this. That is the real part is minus 6 plus 3 iota plus 8 iota minus 4 iota square divided by 4 plus 1. So now this is the real part of, this is plus 4, this is minus 2 by 5 plus 11 by 5 iota, and the real part of this complex number is minus 2 by 5. Okay, so this is the real part of this one, and the second part is find the imaginary part of 1 upon z1 z1 conjugate. Okay, so now look at the board.
So as we know that z into z conjugate is mod z whole square. Okay, so that means z1 into z1 conjugate is 2 minus iota मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है. तो दैट इज 5. तो नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/5 इज 0. तो द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इज 0 बिकॉज देयर आर कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते तो इट इज रिटन एज 0 आयोटा. तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13. मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा बेटा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, ठीक है. अगर वीडियो छोटी रहेगी तो आपको देखने में भी इंटरेस्ट आएगा और आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 13, z इज 1 + 2 iota डिवाइड बाय 1 - 3 iota. यू हैव टू फाइंड मोड z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z हियर. ओके, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना है एंड मोड z फाइंड आउट करना है. तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बेटा. तो ध्यान से देखेंगे 1 + 3 iota डिवाइड बाय 1 + 3 iota दैट इज इक्वल्स टू 1 + 3 iota + 2 iota -6 डिवाइडेड बाय 1 + 9 दैट इज -5 + 5 iota डिवाइड बाय 10 दैट इज -1/2 + 1/2 iota दैट इज z. देन मोड z इज अंडर रूट -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 1/4 + 1/4 that is 1/√2. ओके, एंड आर्ग्यूमेंट हम कैसा निकालते थे, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, b/a दैट इज 1/2 डिवाइड बाय -1/2. ओके, दैट इज इक्वल्स टू -1. देन tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 π/4 एंड एज यू नो दैट z lies in second quadrant because here x is negative, y is positive. Okay, so if z is in, then argument of z is pi minus π/4. pi minus थीटा होता था जैसे मैंने आपको बताया था. इस फॉर्मूला का यूज करोगे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बार आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में. तो दैट इज find the real numbers of x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is equals to 6 minus 24 iota का conjugate. Find x and y. So you can solve this part. This is 3x plus 5x iota minus 3y iota plus minus 5y. Okay, plus 5y because the minus iota square पॉजिटिव बना देगा और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका +24 आयोटा. यू कैन जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो दैट इज 3x + 5 आयोटा y plus 5x minus 3y iota is equals to -6 + 24 iota. So this is a real complex number. This one is another complex, and two complex numbers must be same if and only if when real part of first one is equals to the real part of second one and imaginary part is equals to the second part of the second complex number. So that is 3x plus 5y must be equals to -6 and 5x minus 3y must be equals to 24. So now you can use elimination method and this is 15x plus 25y is equals to -30 and this is 15x minus 9y is equals to 72 and that is minus plus minus, this will be cancelled. This is 34y is equals to -102, then y is equals to -3. If y is equals to -3 then 3x plus 5y is equals to -6, then 3x plus 5 into -3 equals to -6, 3x plus -15 is equals to -6, 3x is equals to 15 minus 6 that is 9. That means x is equals to 3. So our final answer is x is equals to 3 and y is equals to -3. काफी easy था, ठीक है. If you can understand the question, then you are able to solve
the question very easily. If you are not understanding the question what he is want to ask, that means the 50% of the problem still be there. Okay, and if you are able to understand the question, then 50% problem is already solved. Now क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लीजिएगा, इजी है, हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. दिस इज x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, and you have to show that u upon x plus v upon y is equals to 4x square minus y square. This question is also asked so many times in your midterm or pre-board questions. Okay, so this is, you can open this is x cube plus iota y whole cube a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square is equals to u plus iota v. So now you can look at here, this is minus iota y cube, this is 3x square y iota, and this is minus 3xy square u plus iota v. So this is x cube minus 3xy whole square plus this is 3x square y minus y cube iota is equals to u plus iota v. So you can compare both sides. Then comparing both sides, if you can compare both sides, that means real part must be equals to the real part, that is equals to u, and you can take, this is xy square. Okay, so now you can take x common here, that is x square minus 3y square is equals to u, and x square minus 3y square is equals to u by x. This is equation number 1. Similarly, 3x square y minus y cube is equals to v, and that is y is common, that is 3x square minus y square is equals to v, that means 3x square minus y square is equals to v by y. This is second. So we have to show that u by x plus v by y. So you can add equation first and second. Then if you can add equation first and second, that is x square minus 3y square plus 3x square minus y square is equals to u by x plus v by y. That is 4x square minus 4y square is equals to u by x plus v by y. Hence proved. है ना, काफी easy है. Complex number is the easiest chapter of class 11th. Okay, but it is just the introduction. Okay, complex number बहुत ही बड़ी चीज है. When you are going to college, complex number is just not a chapter, it is a subject. It has own books. Question number 17 देखेंगे, काफी important है. If alpha and beta are two different complex number, means alpha and beta are different complex numbers, and mod beta is equals to 1, that is given, then we have to find the value of beta minus alpha divided by 1 minus conjugate of alpha beta. ठीक है, इसके में वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, कर देते हैं. देखिए, गिवन इज mod beta is equals to 1, that means mod beta square is equals to 1, that means mod beta square is equals to, right, that is equals to 1. Anyone has any problem? हमें पता है ना कि z conjugate is equals to mod z whole square. तो बीटा क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, that means बीटा कॉम्प्लीमेंट conjugate is equals to mod beta square, that is equals to 1. So you can put the value of 1 here is beta minus alpha divided by beta conjugate minus alpha conjugate beta. So you can take beta as common. Okay, anyone has any problem? बीट मोड बीटा की वैल्यू में पता है 1 है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, and as you know that
beta minus alpha whole conjugate is beta conjugate alpha conjugate, right? So that is equals to mod beta, that is beta minus alpha whole conjugate. ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें एंड वी नो दैट, देखिए यहाँ पे जो लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मोड जेड इज इक्वल्स टू मोड कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट. तो ये क्या है बेटा आपका सेम है ना. तो दिस इज सेम, दैट इज इक्वल्स टू 1. तो वैल्यू इज, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज का अगर यूज करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट. ओके, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया एंड इन डिफरेंट बुक्स यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो आप वहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट बिकॉज इन दिस टाइप यू कैन रिकॉल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑल्सो. Now question number 19, find the number of non-zero integral solutions of the equation 1 minus x iota. X is equals to 2 raised to the power x and you have to find the non-zero values of x. Okay, so you have to find the conjugate of this. Mod is, this is 1 plus 1. X is equals to 2 raised to the power x. This is root 2. X is equals to 2x. Okay, so that means x by 2 must be equals to x, correct? And क्या वैल्यू होगी बेटा जब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? No, there is no one. That means x must be 0. ठीक है, आपको x को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा. Now come to question number 20. 19 is very easy. You have to solve them. You can take modulus on both sides and open, separate all the complex numbers modulus separately and take out the. तो आपको मिल जाएगा question number 19 का आंसर. But 20 number question is very important. To look at here 1 plus iota divided by 1 minus iota की power m is equals to 1 and you have to find the least positive integral of m. Least means मिलेंगे बहुत सारे, but आपको least one बताना है. ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन. तो पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं बेटा. दिस इज 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा पावर m इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. m इज इक्वल्स टू 1. दैट इज आयोटा पावर m इज इक्वल्स टू 1. तो आयोटा की पावर लीस्ट क्या होगी बेटा? लीस्ट value of m is 4 because 4 पर आपका 1 होगा. all the multiples of 4 you will get iota power m is equals to 1. Okay, so this is the solution of all the chapters. Now I can complete the miscellaneous exercise in next topic or in next video. I will share you some important exemplar questions also. Okay, so don't worry about it. And if you have any problem, please share with me, comment me or DM me, or please like, subscribe and share my channel.